द वुमन या तो उसको गॉडेस के फॉर्म में देखा जाता है, यू नो, लाइक शी सेइंग दैट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, या तो शी इज वेरी गुड या तो शी इज वेरी बैड, या तो शी इज अ गॉडेस या तो शी इज अ डेमोनिस, या तो शी इज एन एंजल या तो शी इज द डेविल. शी इज नेवर अलाउड टू बी ह्यूमन. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, दैट उसको ह्यूमन आइडेंटिटी नहीं दी जाती है, या तो उसको बिल्कुल नीचे गिरा दिया जाता है, या तो उसको एकदम पेडिस्टल पे चढ़ा दिया जाता है, या तो उसको इम्प्योर बोला जाता है या तो उसको प्योर बोला जाता है. देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, you know. Then she says that an authority called Ram, an arrogance called Ram, an ego called Ram, a politics called Ram humiliated me. I am a being of this forest, a Khataka. So this shows a dynamic of power. There's always a power relation between a man and a woman, and because we live in a patriarchal society, because there is no equality, the man always has more power. He can do whatever he wants to a woman, right? And that is what she's talking about. राम ने चाहा तो सीता को छोड़ दिया, राम ने चाहा तो सीता को बचा लिया, राम ने चाहा तो उन्होंने खटाका को मार दिया. You never see the woman having the power, right? You never see the woman having a choice. That is what that's the point that the author is trying to make here. वो उससे पूछ रहे हैं कि आर यू अ मैन और अ वुमन, आर यू ह्यूमन? और सीता बोलती है कि आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन, आई एम एन ऑब्जेक्ट, आई एम द थिंग threatened out by rulers. They roll me over, push me aside, crush me. I am Ravan if Ram so wishes. In Ram's Raj, I am the Sambuga. Sambuga is also a reference to a story in Ramayana. Sambuga is a Dalit, a lower caste man who is killed by Ram. Uh, and then she talks about, she says that I am the horse thrown into the ritual fire. तो जब यज्ञ करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो घोड़े की बलि देते हैं. I am the frog whom Rama's arrow pierced. I am the thing caught in the illusion of a rain of love. So she is talking about that she is a symbol of oppression. She is everybody who has been oppressed. She has been people. She has been and she gives reference to Dalits. Dalits have been oppressed by society since generations. Women have been oppressed by society. Uh, uh, animal cruelty की अगर आप बात करें, animals have been oppressed by humans. So she is a human more than a man, more than a woman, more than any gendered being. She is actually a symbol of oppression. That's what she's saying. And here she says that uh, she has been oppressed in many ways. Uh, and in the last paragraph is very important. तो पूरे पूरे प्ले में सीता अपनी कहानी बता रही है कि कैसे उनको मिथोलॉजी में, कैसे उनको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कैसे एक वुमन को ओप्रेस किया जाता है, कैसे कैसे उसकी आइडेंटिटी उसकी खुद की नहीं होती, कैसे उसको ब्लैक एंड वाइट में पोर्ट्रे किया जाता है बाय मेन, बाय राइटर्स, बाय सोसाइटी. And at the end, the paragraph where she says, there is strength still left. I shall cross the river. I shall cross the river to see the new world, the human form, to create a new Raj. So she is saying that she crossed the river. There is still strength left in her. इतना सफर करने के बाद, इतना दबाए जाने के बाद, इतना oppressed होने के बाद भी उनमें अभी उतनी strength है that she can fight back. She can fight the patriarchy. She can fight her oppression. And crossing the river here is a symbol of breaking out of the shackles of patriarchy. अभी तक उनको जिन shackles में रखा गया है उसको तोड़ना. Crossing the river is actually a symbol for breaking all these oppressions, all these foundations, and creating her own identity, where she says that to assume a new form and create a new Rajya. And there, in the last line, to create a new Rajya means that she is going to form her own identity that is independent of how she has been portrayed till now, that is independent of the restrictions imposed on women by society, right? So that is the text. It's a very simple play, and it's a very interesting play. Now let's look at the themes to make it easier, because इस पे ज़्यादा मटेरियल इंटरनेट पे नहीं है, और इसका जो PDF है वो भी इंटरनेट पे नहीं है. I've prepared a few slides. I have narrowed down a few themes
You can use this, you can read it. I'll upload it at the end of the session, and the slides will be available. I'll just share them with you. So let us discuss some themes. तो ये जो प्ले है इसमें रेफरेंसेस टू द रामायण में से रेफरेंस किए गए हैं। सीता के कैरेक्टर की कहानी है। इट्स अ फेमिनिस्ट प्ले। इसमें बहुत सारी फेमिनिज्म की थीम्स है। इसकी जो सेंट्रल थीम है दैट इज फेमिनिज्म, एंड द ऑथर हियर हैज रीइन्वेंटेड मिथोलॉजी। नो सी, जो हमारी मिथोलॉजी है उसमें विमेन कैरेक्टर्स को कभी हीरो नहीं बनाया गया। इसमें विमेन कैरेक्टर्स को कभी सेंट्रल वॉइस नहीं दी गई। उसमें विमेन कैरेक्टर्स को एक बहुत ही टिपिकल वे में पोर्ट्रे किया गया है। द ओबीडियंट वाइफ, जहाँ पति जाता है, जहाँ अगर उसका पति जंगल में जा रहा है तो जंगल में, अज्ञातवास में जा रहा है तो अज्ञातवास में, स्टेक पे उसको रख रहा है तो यू नो being on stake. So you can compare the character of Sita with Draupadi here. Both women were women of mythology and they suffered. So she has in a way reinvented mythology. She has given a voice to Sita. Uh, and it is the play is also about the story of Sita and what happened after they returned to the kingdom. Some themes in the play are uh, yeah. Uh, as I said, there's a word that I use frequently, which is patriarchy. For people who don't know what patriarchy is, it means पुरुष प्रधानता। एक ऐसा सिस्टम जो मेन को एडवांटेज पे रखता है, एक ऐसा सिस्टम जो विमेन को दबा के रखता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर का सारा कंट्रोल मेन के पास है। दैट इज पेट्रियार्की, राइट? So here the author is questioning patriarchy, and the author is also saying कि एक women को बनाया जाता है, you know, एक women का जो idea है, the submissive wife, the ideal daughter, the loving mother, वो थोपा जाता है by society on women. So for instance, I'll digress here a bit and I'll give a crude example from our lives. You know? तो आप अगर आपके घर में भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, तो अक्सर ये डायनामिक होता है कि जब भाई कोई गलती करता है, लड़का कोई गलती करता है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे वो तो ऐसा नालायक है, उसको तो वो तो ऐसा ही है, जाने दो, राइट? But when the girl makes a mistake, when the girl defies the parents or any authority, she is shamed, right? When a man, if you talk about films, अगर सलमान खान की फिल्में सबको पसंद है, सलमान खान की फिल्में सबको क्यों पसंद है? क्योंकि वो अपनी शर्ट उतारते हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज लाइक बाय एवरीबडी। कोई उनको स्लट शेम नहीं करता, कोई उनको ये नहीं बोलता कि अरे यहाँ तो न्यूडिटी है, शर्ट क्यों उतारी, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, nobody, not one of us. And when a lady in a film, she exposes her skin, तो अगर आप इंस्टा पे देखें, लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे संस्कारों में नहीं है, वुमेन को ढक के रखना चाहिए अपने आप को। तो वाई दिस डाइकोटमी, वाई दिस पार्शियलिटी, यू नो? ये किसने बोला कि एक काम जो एक मैन कर सकता है वो वुमेन नहीं कर सकती? सोसाइटी में, राइट? So we have these rules, we have these regulations, and these are not made by God. These have been made by men, because men have written scriptures, men have written books, men have thought on the behalf of women. So that is what the author is trying to say, that the woman is a construct. I'll read what I've written. The play interrogates the idea of a woman as constructed, shaped, and imposed by social and cultural forces. Through the metaphor of Sita, who is banished to the forest by Ram, the play embarks upon a series of uncomfortable questions at patriarchy. तो सीता की स्टोरी उन्होंने यूज की है पेट्रियार्की को क्वेश्चन करने के लिए. Then here Sita is also a symbol of injustice. You remember the paragraph where Sita says that I am human. I am everything that has been oppressed. I am everything जिसके साथ अन्याय या injustice हुआ है, right? So in that way she is a symbol for every type of injustice and degradation.
She also questions, here C.S. Lakshmi Ambai also questions कि सीता को यूजुअली लोग कैसे देखते हैं, नो? तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं जो रामायण पढ़ते हैं और रामायण पे काम करते हैं, उनका ये कहना है कि जो ओरिजिनल रामायण है, जो रामचरित मानस है तुलसीदास की, या फिर जो वाल्मीकि की रामायण है, उसमें सीता बिल्कुल सबमिसिव नहीं है। जितनी भी, इनफैक्ट वो यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे जितने भी मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स है, जितने भी टेक्स्ट है, इसमें वुमन को वॉइस दी गई है, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। अगर आप महाभारत को याद करें तो द्रौपदी पूछती है कि किस हक से मुझे स्टेक पे लगाया, मुझे दाव पे लगाया, राइट? तो वुमेन हैव वॉइस, बट टीवी में क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, टीवी में, किताबों में सीता का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही टिपिकल वे में दिखाया है। शी इज ईदर द सबमिसिव ओबीडिएंट वाइफ एंड मदर, शी इज लाइक अ फ्लैट पेपर डॉल जो अपने मिसफॉर्चून्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, नो? शी shown as accepting misfortunes with meek martyrdom, and इतना सहने के बाद she quietly disappears into the earth, but not before fulfilling her duty of producing twin male heirs to safeguard her husband's lineage, right? तो एक वुमन को हमारी जो कन्वेंशनल सोसाइटी है उसमें क्या देखते, कैसे देखा जाता है? शी इज जस्ट अ टूल टू propagate the lineage, वंश बढ़ाने का एक टूल. So that is what they have shown Sita as. Then she's always shown, any woman, especially women in mythology, in popular culture, are shown as the secondary partner in marriage. Why does Sita not refuse to go to exile? She is a queen after all. उसका हक है राजमहल में रहने का. But then she has to go wherever her husband or wherever the male partner is going, because she would need his protection. सीता को रावण किडनैप करता है तो राम आते हैं उसे बचाने. सीता को कुछ चाहिए होता है तो राम आते हैं उसको देने के लिए. So the male is always portrayed as the protector, and the woman is always portrayed as the helpless person. And like अक्सर जो वाइफ्स होती हैं, अगर किसी की शादी होती है किसी लड़की की, तो उसको अक्सर सीता के साथ कंपेयर किया जाता है. ये बोला जाता है कि दिस इज सीता माय डॉटर एंड शी विल फॉलो यू लाइक अ शैडो. एंड इन फैक्ट दिस इज व्हाट जनक सेज टू राम कि मेरी बेटी जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें फॉलो करेगी, राइट? So this is how women are portrayed in popular culture. This is how they are thought of. This is how they are written. This is how they are shown. Because the power of making a woman or portraying a woman is in a man's hands. And then how does the author remake the myth of Sita? How does she remake how we know Sita as? So सीता को रामायण में सबमिसिव दिखाया जाता है, बट अंबाई की जो सीता है, शी इज अ सिंबॉलिक इनैक्टमेंट ऑफ अ वुमन्स anguish and suffering, and she desires freedom and is the resistant to oppressive social norms, right? So इस तरीके से अंबाई ने सीता को रीइन्वेंट किया है. Sita is mostly silent, as we know her, but in this play, Sita's silence is broken. She protests rather than being compliant, unlike in the epic, and she searches for her own independent identity. अगर आप एपिक में देखें, अगर आप रामायण में देखें, तो सीता की आइडेंटिटी जो है वो राम पे डिपेंडेंट है, बट हियर she wants to have her own identity. She searches for her own identity, which is independent from the epic writers or the preachers or interpreters of the epic. If you look at Sita from a feminist point of view, which is what the author has done here, she is a victim of gender politics. वो फॉरेस्ट इसलिए गई because she loved Ram, but she was imprisoned in the forest because Ravan desired her, and now she has to roam in the forest because
of gender politics. Why? Because the woman can only be either pure or impure. She is pure when she is only with one woman. She is impure if she digresses those social norms. Right? So that is gender politics. Sita is a representation of the suffering woman in a patriarchal society. And if you think about it, you know, हम सब राम को एक आइडियल मैन, एक आइडियल किंग की तरह सेलिब्रेट करते हैं. उनके सारे सब्जेक्ट्स हैप्पी थे, बट सीता वाज द अनहैप्पीएस्ट ह्यूमन. शी वाज द अनहैप्पीएस्ट पर्सन इन द एंटायर रामायण. राम ने अपने एक सब्जेक्ट यानी उस धोबी को, जिसने सीता की प्योरिटी को क्वेश्चन किया, उसको खुश रखना जरूरी समझा रादर देन हिज ओन वाइफ. यू नो, सो ही probably was a great king, but he was never a good husband. That is how we can criticize Ram from a feminist point of view. And that is sad because Sita sacrificed all her joys and comforts to be with him during his 14 years of exile. But when Ram's time came, he just banished her, right? Even though she proved her innocence. So after a lot of suffering, if we look at the end of the play, the ending lines that I shall cross the river, you know. So after having endured all the hardships and rejections, uh, she's tired, but then she still wants to face the challenge of surviving and breaking uh, a society of man-made rules where women are oppressed. And ultimately, at the end, crossing the river is a symbol of breaking these shackles of patriarchy, as I mentioned earlier. And at the end, she resolves to reclaim her own identity, right? So, वो जो last line है, that I shall cross the river to create a new Rajya, that is actually her proclamation to reclaim her identity. And this is the point that I was talking about earlier, कि women को society में कैसे portray किया जाता है, right? She's either depicted as a goddess or a demon, but she's never depicted as a human, right? If and then if you question it, नवरात्रे होते हैं, नौ दुर्गी होते हैं, तो हम गॉडेसेस की पूजा करते हैं, हम कन्याओं को बुलाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको खाना खिलाते हैं. But if you look in the same houses, there is domestic violence. There are people beating their wives. There are people beating their daughters. There are relatives raping small girl children. There are rapes happening daily, everywhere, especially in our country. And the woman who we rape, we worship the same woman as a goddess when it comes to religion, when it comes to our festivals, right? So that is the irony. Um, and here, um, that's the point that the author makes. And Sita is also shown as a symbol for every oppressed women. Uh, and like the author tells how she's been oppressed, how every woman has been oppressed throughout history, but then at the end, the playwright also has hope for women, and that hope is expressed in the last lines in the poem. So these are some themes. The main themes that are running throughout the play are of feminism and reinventing mythology. And this is Ambai's way of looking at Ramayana as the story of Sita from a feminist point of view. So these are the themes. I'll upload this write-up so that you can read it and look at it and understand the themes better. Okay, all right. Now we are done with the entire syllabus. I would like to, before we move on to the question answer session, I would like to clarify a few points. Unit 1 और Unit 5 के कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने नहीं किए हैं. Why? Because वो आर्टिकल्स आप खुद पढ़ सकते हैं. वो
प्रैक्टिस के लिए है, यूनिट 1 के स्पेशली जो आर्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं. आई थिंक यूनिट 5 के भी जो आर्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं. Just read them on your own. I have already explained you the methods that you should be employing for reading them. I have already explained you कि उनको कैसे पढ़ना है और वो जो पूरा यूनिट का पॉइंट है वो क्या है, राइट. आई हैव अपलोडेड द पीडीएफ्स ऑफ जो यूनिट 1 है, सॉरी जो लेक्चर 1 है जिसमें हमने पोएट्री कवर किया था. तो पोएट्री का टेक्स्ट आपको सारी जितनी पोएम्स हैं वो इंटरनेट पे मिल जाएगा बहुत ईजिली. जस्ट गूगल द टाइटल्स ऑफ द पोएम एंड यू विल ऑल्सो गेट वेरी गुड रिसोर्सेज ऑन एनालिसिस, so you can google them also. I have uploaded a slide, a PowerPoint presentation on it, so you can look at that also. जो शॉर्ट स्टोरी वाला यूनिट है जो हमने कल किया था, तो उसके पीडीएफ्स बहुत सारे इंटरनेट पे नहीं है, बट उसके सारे पीडीएफ उसमें जो भी स्टोरी हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं फाइल्स में. उसमें जो पहली स्टोरी है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी. एंड ये जो प्ले है इसका पीडीएफ ऑल्सो आई अपलोड बाय टुडे इवनिंग, so you can ask sir how to access it. So I think this is it. Now let us move on to the question answer session. If you have any doubts, if you have any questions, please ask. आपको जो भी सवाल है वो पूछिए. Ravi is asking how to improve my English skills. Please advise me. Keep practicing. It's a language. Any language that you want to learn or become good at, you need practice. It's like maths. My bad, I cannot scroll down. I am repeating myself again. I am uploading all the notes. आपको कैसे एक्सेस करना है या आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, you have to figure that out and you have to ask the authority. I am uploading all the notes, so from my end it's not a problem. Yes, today is the last session. See, if we talk about the questions or if we talk about what might come in the exam, so I'll go unit by unit. Unit 1 is based on reading comprehension. तो उसमें से कोई एक अनसीन पैसेज आ सकता है और उस comprehension based question पूछे जा सकते हैं, right? That we discussed yesterday. Now let us come to the second unit, that is drama. ड्रामा और पोएट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के आते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मतलब अगर 100 लाइन्स का प्ले है उसमें से आपको 4 लाइनें उठा के दे देंगे और वो आपको पूछेंगे कि ये लाइनें किसने लिखी हैं, ये लाइनें कौन से प्ले या कौन से पोएम में से हैं, और उसके बेसिस पे फिर वो आपसे सवाल पूछेंगे कि इन लाइनों में ऑथर क्या कहना चाहता है, इस लाइन का क्या मतलब है, आपका क्या ओपिनियन है. सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे आ सकते हैं. देन जो टेक्निकल पार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, पोइट्री में हमने सिंधी, मेटाफोर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. आज हमने टोन, रजिस्टर पढ़ा था, तो इस पे टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं. इससे what they can do is they can give you a paragraph, they can give you a passage and ask you to identify, ask you application based questions on that. Yes, grammar is part of the syllabus, तो grammar जो हमने पढ़ी है वो आएगी. Sir, if you are whoever is moderating this session, सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फाइलें जो अपलोड की गई हैं, जो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो आप उनको प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा एक बार कि वो कैसे वो फाइलें जो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स सीम टू बी अ लिटिल कंफ्यूज्ड.
Hmm. Okay. Someone is asking me, can you start taking classes of English communication skills too? Uh, I can. I will. When I do, I'll probably make an announcement. You can Google it. I don't know. Someone is asking, will all the lectures get uploaded on the SL website? I am not sure. I am not informed about this. You can ask the authorities. There is no book for it. There is no book for your course. आपका जो कोर्स है आपको पूरा इंटरनेट से मिलेगा या फिर जो मैंने फाइल्स अपलोड की है वहाँ मिलेगा. There is no book for it. Uh, some people are asking about important questions. We've already explained that किस type के questions आ सकते हैं. It's very hard to tell कि क्या important है और क्या नहीं है, right? And it's also there's one more thing, you know, it's nobody's fault. It's not your fault. It's not my fault because and we cannot predict किस type के questions आएंगे because आपका जो syllabus है और आपका जो pattern है वो इसी साल change हुआ है. आपका सेमेस्टर पैटर्न भी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है. आपका इस साल या आई डोंट नो लास्ट ईयर आपका जो पूरा सिलेबस है वो भी री इन्वेंट हुआ है. So actually you are going to be an experimental batch. So it's very hard to predict. Um, I don't see any doubts related to the play. Can you please ask doubts related to the play? I don't know about the exams. The university does not know about the exams. When they know, they'll tell you. Keep updating yourself by, you know, browsing the website. Sankalp, all the chapters have been completed, all the units have been completed, the syllabus is complete. Also, there's one more thing. For people who are saying that उनको files नहीं मिल रही, what you can do is there are a lot of helpline numbers that SOL has released. So to SOL's website, check what they have because they are also going to upload the material and they are also going to. There's one more thing. Student yesterday told me that crossing the river आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है तो इसलिए मैंने डिटेल्ड स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आज कीपिंग दैट इन माइंड that you don't have extra material. So the sites that I have prepared, they will suffice. Devika is saying that they understood the play very well. Thank you, Devika. I'm glad. Um, which type of questions can come from the play? Mostly reference to content. या फिर सी मैंने आपको बोला कि जो सेंट्रल थीम है वो फेमिनिज्म है तो उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. दैट व्हाट लाइक व्हाट इज द व्हाट वी ट्राइंग टू से हियर. इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं.
someone is asking कि एग्जाम में लेटर्स आएंगे या नहीं. See, letters are not a part of your syllabus. Letters are not a part of your syllabus, but just in case, you should update yourself with the format of letter writing, formal letter writing. Right? So letters are not a formal part of your syllabus, but you can update yourself. So I'm asking आंसर का वर्ड लिमिट होता है क्या? आंसर का वर्ड लिमिट नहीं होता है एग्जाम में. I think a lot of people are very worried about the files. See, from my end, again, repeating myself for the billionth time, I have uploaded them. However, however, हो सकता है कि आपको फाइल्स मिलने में टाइम लगे. हो सकता है एसओएल की वेबसाइट पे अपलोड हो सकता है कि सर इसको अपलोड करे और आप तक पहुँचाए. तो जस्ट बी लिटिल पेशेंट. ट्राई टू कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज till then, and just be a little patient. हो सकता है कि 2-3 दिन लगे, right? So but you will get the files. Don't worry about it. Files upload हो गई है तो मिल जाएंगी. Thank you, Manish. I'm glad you liked the lecture. Okay, all right. All right. So I don't see any more doubts. I hope that you had a good time. I hope that all your doubts were resolved, and I hope that you do well in your exams and that you were able to understand the entire syllabus and the entire course. It's a little, it was a little, hodgepodge because uh, it is a tough paper and we had to complete 5 units. Uh, how many? Like 4 poems, 3 short stories, uh, 4 articles in 1 unit, 3 articles in the fifth unit, one huge play in 3 days. So I think you should pat yourself on the back for completing an entire course and learning so much in 3 days. That too, like 2 hours each day. So I think it's been great. Um, so I think I'll end the lecture here. It's been great teaching you guys, and if you have any doubts, I think you can ask them in the chat. I'll try to answer as many as I can. Right? We'll end the session here. Uh, hello, hello. I think there's one more minute. So you can ask more doubts. I don't think anybody is moderating the session. Hello. Alright, so I'll end the session here. I hope that you have a good time and all the best. All the best for your exam.
1,62 और प्लस 300 कोई 1,462 हो गए सारे मिनट बोल रहे ना मैं तो बोलो कि पाँच पाँच बचे थे ना हाँ कितने हुए 5 एम 10 मिनट मेरी बात सुनो ना 4700 बच गए मेरे पास तो 4700 बच गए ठीक है अब जो हम आप मुझे ये बता देना आपको निकालने कितने देना है क्योंकि बचना कुछ नहीं होगा तो 4700 बच गए ना तो एक की तो कर दी पेमेंट का करी वो तो आप करोगे ना इंडेक्स की इंडियन की कर दो उसकी पेमेंट भी कर दो भारत की भी देख रही होगा ऑनलाइन इसकी कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट की होगा मैं दिमाग लगा लूँ और कुछ लगा लूँगा तो आपको मत लगाओ ना बहुत लगा रहा मेरे को उसमें से करनी नहीं ना तो मैं आपको कैश कर दे दूँगी अरे वो तो सोच रही मैं तो सोचो तो फिर वो 300 की जोड़ लो 300 तो वो तो पेमेंट चली गई ना आपको दोबारा करनी है क्या नहीं ना वो तो 4700 में से जोड़ लो आपसे तो